Hello friends, in today's video we are going to again cover pharmaceutical calculations. In our earlier videos we have covered the density method and alcohol dilution method. Now this is again a very popular and very important method from the pharmaceutical calculation point of view, which is the rapid most method of calculation for the pharmacist. Alligation method. So what is the meaning of alligation? Alligatio, in Latin term, alligatio means the act of attaching. So it is alligation method. Now there are two types of alligation method. Alligation alternate, it is also known as rectangle method, or alligation medial method. Now alligation medial method, we will see it later on because it is not that important from students point of view in exam, but alligation alternate is very important from students point of view because many a times the questions are asked on alligation alternate or rectangle method. Now what it is actually, to make a mixture of required strength, that means whatever the strength is required, we are supposed to make a mixture of that strength. For that we need to find out the relative amount in terms of parts or proportions of solution or solid of different strength. That means different strength will be given for you and one strength will be required. So to make a mixture of that given different strength to required strength, we need to use the alligation alternate or rectangle method. But before going to this method, and this meaning will be very much clear to you when we will see the rules and some examples. So before going to the method, we are supposed to clear some rules of that method. Now there are few rules of alligation alternate method or rectangle method. The rules are: the required strength, whatever the strength is required for the calculation, that required strength of solution must fall in the two given strength. That means what we have seen in the meaning we have seen that we are supposed to calculate the strength from the mixture of strengths. So the required strength, whatever the strength is required, we need to calculate. That strength must fall in between the two given strength. There can be two strength given, there can be four strength given, there can be three strengths given, and you are supposed to calculate the required strength from the mixture. So the required strength, whatever is there, it should fall in between the two given strength. For example, if the question is to find the parts of 95%, 45% alcohol to make 70%, so 70% is the required strength. What the rule says, the required strength must fall between two given strength. So the 70% alcohol falls between the given strengths, that is 45% and 95%. The 70 lies in between 45 and 95. So this rule should be satisfied first by the question itself. Now second rule says, we cannot prepare diluted or concentrated solutions than the given strength. That means 45 is the given strength and 95 is the given strength. We cannot prepare above 95% concentrated solutions and below 45% concentrated solutions. So this is clear with the example. 95% and 45% are the given strength. Required strength is 70%. So what the rule says, we cannot prepare dilute or concentrated solutions than the given strength. So given strength, one strength is 45, one strength is 95. So we cannot prepare the diluted solutions, that is 40% for example, and we cannot prepare the concentrated solutions, say for example 96%, 98% or 100% solutions. Next is, we can prepare the new solution of the strength in between 45 and 95. But we can prepare the solutions of the strength which lie between the two given strengths. What the next rule says, in case, even in some cases, you need to do it. So that means if you want to prepare some diluted concentrate or you require to prepare some concentrated solutions, then the
given strength. So to get the dilute products, as you all know, dilute product लेना है original strength से, that means 45% is the minimum strength. So उसके dilute अगर लेना है तो obviously तुम लोगों को dilute करना है, so you will need a diluent or the base which do not contain any active ingredient. So you need to add a diluent which do not show any activity. And if you want to get some concentrated products than the original, then you need to add the active ingredient to it, that is addition of pure to a preparation of known strength. Then next rule says for the alligation method is, now here you are supposed to put the known strength of you are supposed to put the known strength on the left hand corner of the rectangle. Now as you can see in the diagram, this is the rectangle. The known strengths in the solutions were 45% and 95%. So according to rule, what rule says? The known strengths you are supposed to put it on the left hand corner. So this is left hand corner, this is right hand corner. लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे नॉन स्ट्रेंथ लिखा है, पर अभी 95% है, 45% है, कौन सा ऊपर लिखना है, कौन सा नीचे लिखना है. सो द कंटिन्यूएशन रूल सेज यू आर सपोज टू राइट देम ऑन द लेफ्ट हैंड कॉर्नर in descending order. So this order is very important, in descending order. So the strengths given are 95% and 45%. So if you are supposed to put it into the descending order, then first 95 will come and then 45 will come. So this will occupy the corners of the rectangle, 95 and 45. So both the rules got satisfied. Known strengths you are supposed to put it on the left hand corner, then that too in descending order, so it is in descending order. And the required strength you are supposed to put it in the point of intersection of the diagonals. That means this is the point of intersection and the required strength is 70. So 70 will come here at the point of intersection. So this is the first rule, how you are supposed to arrange the strengths. So 95%, 45% are the required strength which you have arranged in the left hand, on the left hand corner in the descending order. 70% is the strength required which you have arranged it at the point of intersection of the diagonals. Now what the further rule says, next you are supposed to subtract the smaller figure from the larger figure, dropping the sign. That means smaller figure is 70, larger figure is 95. Here smaller figure is 45, larger figure is 70. So subtract the smaller figure from the larger, dropping the sign. Here you will subtract 45 from the 70. Here you will subtract 70 from the 95. So you are supposed to drop the sign even if minus comes. Then on the same diagonal, you are supposed to write it on the same diagonal, dropping the sign on the same diagonal, and write the result at the other end. Here next rule says subtract the smaller figure from the larger. That is, in this, on this diagonal you are supposed to subtract 70 from the 95 and you are supposed to subtract it on the same diagonal and write it the result at the other end. So 95 minus 70 iska same diagonal hai ye, but you are supposed to write the answer here. And 45 minus 70 you are supposed to write the answer at the other end, that is this end, 25 parts. What the next rule says, the result at the other end, इसका रिजल्ट ये एंड में लिखा है, इसका रिजल्ट ये एंड में लिखा है, तो ये जो अदर एंड का रिजल्ट है जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, ये क्या देता है, पार्ट्स ऑफ रिस्पेक्टिव सॉल्यूशन. मतलब यहाँ पे लिखा है ये इसका है, फिर भी ये पार्ट्स किसके हैं, 95% के, मतलब पार्ट्स ऑफ रिस्पेक्टिव स्ट्रेंथ. सो द रिजल्ट एट द अदर एंड ऑफ द हॉरिजॉन्टल लाइन gives the part of result at the other end of the horizontal line, gives the part of respective solution to be mixed. 25 parts of 95% solution is to be mixed to get the required strength.
required strength is 70. So 25 parts of 95% and 25 parts of 45% needed to be mixed to give the 70% strength. So answer will be 25 parts of 95% alcohol and 25 parts of 45% alcohol are needed to make 70% strength. The total parts are 50 parts. So these were some of the rules. So I will revise the rules once again. Now, first rule was, what was the first rule? First rule was, first you are supposed to have the strengths in the question. So the question was 95% and 45% strength was given to you people, and from that strength you are supposed to calculate it for the 70% alcohol. So 95% was the higher range, 45% was the lower range. So the ranges you have written it at the left hand corner in the descending order, this way. Descending order you have written. The second rule says you are supposed to subtract it, the smaller figure from the larger figure, smaller figure from the larger figure, and you are supposed to write the result at the other end. Then the result at the other end gives the strength or the parts to be mixed of the respective solution on the horizontal line, that is 95% alcohol, 25 parts of 95% alcohol. What the next rule says? The next rule says when the admixture of more than 2 is there, so in that case there can be 3 strengths and there can be 4 strengths also. So if there are 4 strengths given and you are supposed to calculate for 1, so you already have 2 couples. So whenever there is admixture, you are supposed to make a couple, a pair you are supposed to make. So in case of 4, there will be 2 couples. But what if there is admixture of 3? So one component is linked twice. So how it is, we will see it with the help of one example. Now in case of 3, the question is to prepare 8% from 3%, 6%, 10%. Now given strengths are 3, 6, 10. Required strength is 8. Now this 8 falls in between 6 and 10 and 3 and 10. So 10 is linked twice. मतलब 2 ranges है. एक तो between 6 to 10 and एक है between 3 to 10. So 8% दोनों range में fall होता है. तो 10% क्या है? 2 बार link हुआ है. So 3 linked to 10 and 6 linked to 10. Required is 8%. So as the 10 links twice, so it will give you 2 answers. How it is? Now according to the rule, we have made couples, right? Here we have made 2 couples, 3 linked to 6 and 6 linked to 10. Now according to the rule, you are supposed to arrange the given strengths on the left hand corner in descending order. So एक pair क्या बना? 6 linked to 10 and एक पेयर क्या बना? 3 linked to 10. So descending order में लिखना है तो पहले पेयर में 6 linked to 10 है तो 10 ऊपर आएगा, 6 नीचे आएगा. Required strength है 8. So 10 minus 8. 8 minus 10 will give you 2 and 6 minus 8 will give you 2. So ये result किसका है? 10% का. So 2 parts of 10%. Here also 2 parts of 6% on the same horizontal line. दूसरा कपल कौन सा है? 10 और 3 का. 3 linked to 10. So it is 10 ऊपर आएगा, 3 नीचे आएगा क्योंकि descending order में लिखना है. Required strength 8 है. So 8 minus 10 2 and 8 minus 3 3 minus 8 5. So but ये 5 इसका नहीं है, 3 का नहीं है, 3% का नहीं है, ये 10% का है क्योंकि horizontal line का same respective strength लेना है. So 5 parts of 10% and 2 parts of 3%. अभी if you will have a look onto the given parts, so 10% के तो 2 part हो गए, इसीलिए 2 parts of 10% first का and 5 parts of 10% second का. So 2 plus 5 हो जाएगा 7 parts. मतलब
2 parts of 3%, 2 parts of 6%, and 2 plus 5, that is 7 parts of 10% is required. Now you understood in case of 3 how you are supposed to make the couple. The figure which link twice, you are supposed to make the couples with the same figure by taking other two figures. Now here the question is, how many parts of 80%, 65%, 32% and 20% is to be mixed to get 40% alcohol? Now in case of 4, if you will see, according to the rule, we are supposed to make two couples first. The given strengths are 80%, 65%, 32% and 20%. 80%, 65, 32, 20. So 80 minus 40 is 40. 40 minus 65 is 25. 32 minus 40 is 8 and 20 minus 40 is 20. ये तुम लोग ये दो पार्ट्स जो है ये ऊपर नीचे चल सकता है and this ऊपर नीचे will do. How come? यहाँ पे अगर if you will see 80 minus 40 is 40. यहाँ पे क्या था? 80 minus 40 was 40. I have written it here and in this picture I have written it here. Now 65 minus 40 is 25. Here I have written it upstairs above 40. Here I have written it below 40. Now in this case 32 minus 40 is 8, which is at the second step, but here 32 minus 40 is at first step. Here 20 minus 40 is 20 at first and 20 minus 40 is 20 is at second position. So this two exchange will do. So here 8 parts of 80%, here 20 parts of 80%, here 8 parts of 65% and here 8 parts of 80%. So this alteration will do. So the below table will tell you these are the percentage which are given and these are the parts which we have calculated in the first and in the second picture. So 80%, 65%, 32%, 20% was given and the parts which we have calculated in first figure, the parts are 28, 25, 40 for respective 80, 65, 32, 20. So it is 28, 25, 40. But in second case, the parts are 8 of 80, 20 of 65, 40 of 32, 25 of 20. So 8, 20 यहाँ पे अल्टरेशन हुआ है. 65% में 8 पार्ट्स था, यहाँ पे 80% में 8 पार्ट्स है. यहाँ पे 80% में 20 पार्ट्स था, यहाँ पे 65% में 20 पार्ट्स है. So this alteration will do, but not below here. So the rules you are supposed to follow for the couples. Now we will solve the sums here. First question, which is just for two strengths, 95 and 49 are the given strengths and 70 is the required strength. So 95 and 49 we will write it down in descending manner at the left hand corner. 95, 70 minus 95 is 25. So we will write down in the same diagonal. 49 minus 70 is 21. We have written it in the same direction. But these are the parts of 95% horizontal line पे same जो respective strength है उसका part. So 21 parts of 95% alcohol and 25 parts of 49% alcohol when will be mixed, they will give you 70% strength. That is total 46. Second, in what proportion 70% and 50% solution is to be mixed to make 440 ml of 30% solution? Now here there is not only alligation, but this is the combination of alligation as well as alcohol dilution. So first
by using alligation method, 70 and 15, we are supposed to write it at the left hand corner. 70 50 in descending order, required strength is 30%. So you have written it at the point of intersection. 30 minus 70 is 40, 15 minus 30 is 15. So 15 parts of 70%, 40 parts of 15%, total 55 parts of 30%. So in this step, now second, we need 440 ml of 30%. So by using ratio proportion method. Now what is ratio proportion method? We will see it in detail in next session or the next point. So यहाँ पे 15:55 मतलब 15 parts of 70%, 15 parts of 70% अल्कोहल एंड टोटल पार्ट्स है 55. सो 55 में से 15 पार्ट्स एंड वॉल्यूम क्या है 440 ml रिक्वायर्ड. सो कितना वॉल्यूम चाहिए? सो अभी 55 join to question will give you means and 15 and 440 join will give you extremes. So 55 into x, this means are equal to 15 into 440. So x you are supposed to calculate. 15 into 440 divided by 55, which will give you 120 ml, which is same as that of डाइल्यूशन मेथड. सिर्फ यहाँ पे नाम अलग है, यहाँ पे रेशो प्रोपोर्शन मेथड है. और अगर आप डाइल्यूशन से जाते हो तो 55 पार्ट्स है जिसमें 15 पार्ट्स 70% के हैं और 30% के लिए तुम लोगों को कैलकुलेट करना है. सो दैट विल ऑल्सो डू. मतलब रेशो प्रोपोर्शन मेथड इलेबोरेटिवली हम लोग आगे देखने वाले हैं. तो अभी 120 ml किसका था? 70% का. सो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 440 किसका था? 30% का. 120 है 70% का. इफ यू विल सबट्रैक्ट द रिमेनिंग अमाउंट यू विल गेट इट फॉर 15%. सो दिस विल गिव यू द आंसर ऑफ 15% एंड दिस इज द वॉल्यूम ऑफ 70%. और by the same method you can calculate separately for 15%. यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया था? 15 पार्ट थे, 15 पार्ट्स था, 55 टोटल पार्ट्स थे. यहाँ पे क्या आएगा? 40 पार्ट्स है 15% का, तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ 15 40 आएगा. एवरीथिंग रिमेन्स द सेम. पार्ट्स पे डिपेंड करता है परसेंटेज के. नाउ अभी रेशो प्रपोर्शन मेथड एक्चुअली क्या है ये तुम लोगों को कंफ्यूजन होगा. तो रेशो प्रपोर्शन मेथड वी विल सी इन डिटेल नाउ. अभी रेशो प्रपोर्शन मेथड जो है, it is not mandatory that you should follow ratio proportion only. You can follow the dilution wala formula also, but ratio proportion method is the proper method to be used in alligation. So ratio proportion method क्या है? रेशो क्या था? 15 पार्ट्स थे 55 पार्ट्स के. 15 पार्ट्स थे 70% अल्कोहल के और 55 पार्ट्स थे टोटल पार्ट. वॉल्यूम रिक्वायर था 440. ये आंसर हम लोगों को आ गया था 120. तो अभी ये दो क्या थे? मीन. और ये दो क्या थे? एक्सट्रीम. सो अभी रेशो प्रोपोर्शन में क्या है? रेशो में अभी यहाँ पे 15 डिवाइड बाय 55 किया, आंसर है 0.27. 120 डिवाइड बाय 440 किया तो आंसर है 0.27. तो पहला रूल क्या है? इफ द टू टर्म्स ऑफ रेशोज, टू टर्म्स of ratios, ये है ratio, if they are multiplied or divided by the same number, the value of ratio is unchanged. मतलब 15 divided by 55 is equal to 0.27 and 120 divided by 440 is 0.27. 15 divided by 55 is 0.27. तो दोनों का वैल्यू क्या है? 0.27. That is, if 55 multiplied by 0.27 will give you 15. 440 multiplied by 0.27 will give you 120. So second क्या है? ratios having same values are equivalent. अभी ये एक रेशो है जिसका वैल्यू 0.27 है, ये एक रेशो है जिसका वैल्यू 0.27 है. तो ये दोनों रेशो क्या हो जाएंगे? इक्विवेलेंट हो जाएंगे. इसीलिए हम लोगों ने क्या लिखा है? 15:55
is equivalent to 120 is to 440. Now 15 is to 55 and 120 is to 440. These are the equivalent ratio. So अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम लोग करते हैं दोनों रेशो में, तो क्रॉस प्रोडक्ट जो है 120 इंटू 55 and 15 into 440. 120 into 55 is 6600 and 15 into 440 is also 6600. तो तीसरा रूल क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट्स भी सेम होते हैं. जो दो रेशो का वैल्यू सेम होता है वो रेशो इक्विवेलेंट होते हैं, और दो रेशो के क्रॉस प्रोडक्ट जो होते हैं वो भी सेम होते हैं, और उनके रेसिप्रोकल्स जो होते हैं वो भी इक्वल होते हैं. वो कैसे? अभी 15 डिवाइड बाय 55 है तो उसका रेसिप्रोकल हो गया 55 डिवाइड बाय 15. सो उसका आंसर है 3.67. एंड 120 डिवाइड बाय 440 रेशो था, उसका रेसिप्रोकल हो गया 440 डिवाइड बाय 120. रेसिप्रोकल मतलब उसका उल्टा. सो उसका भी आंसर है 3.67. तो ये दोनों भी रेसिप्रोकल जो है वो भी इक्वल है. क्रॉस प्रोडक्ट जो होते हैं वो भी सेम होते हैं और उनका वैल्यू भी सेम होता है, इसीलिए वो रेशो इक्विवेलेंट होते हैं. तो ये है रेशो प्रपोर्शन मेथड. अभी नेक्स्ट केस में ये था रेशो प्रपोर्शन मेथड का रेशो. अभी हम लोगों को देखना है प्रपोर्शन का मीनिंग. रेशो का मीनिंग वी हैव ऑलरेडी सीन. रेशो मतलब 15 डिवाइड बाय 55 एंड 120 डिवाइड बाय 440. ये एक रेशो है, ये दूसरा रेशो है. रेशो के रूल्स क्या थे? उनका रेसिप्रोकल भी इक्वल होता है, उनका क्रॉस प्रोडक्ट भी इक्वल होता है और उनका वैल्यू भी सेम होता है. अभी प्रपोर्शन में क्या है? 15 is to 55 इक्वल टू 120 is to 440. तो ये जो बीच के है 55 एंड 120 ये मीन्स है, एंड 15 एंड 440 ये एक्सट्रीम्स है. सो अभी रूल क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम. मतलब 55 इंटू 120 का प्रोडक्ट जो आएगा it will be equal to 15 into 440. So 55 into 120 is equal to 15 into 440. तो प्रोडक्ट है 6600. इसका भी प्रोडक्ट है 6600. हेंस प्रूव्ड. सो प्रोडक्ट दोनों मीन का प्रोडक्ट एंड दोनों एक्सट्रीम का प्रोडक्ट इक्वल होगा. अभी ये जो प्रोडक्ट आया है ऑफ एक्सट्रीम, इफ यू डिवाइड ये एक्सट्रीम का प्रोडक्ट को इफ यू डिवाइड बाय एनी वन मीन, से फॉर 55 या फिर 120, सो इट विल गिव यू अदर मीन. मतलब 6600 को तुम लोग 55 या फिर 120 में से किसी को भी डिवाइड करते हो. यहाँ पे हम लोगों ने 55 से डिवाइड किया है, तो आंसर क्या आएगा? दूसरा मीन. तो आंसर आया इसका 120. हेंस इट इज प्रूव्ड. एंड द प्रोडक्ट ऑफ मीन, यहाँ पे क्या था? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम को डिवाइड करोगे मीन से तो दूसरा मीन आएगा. यहाँ पे क्या है? प्रोडक्ट ऑफ मीन को डिवाइड करोगे किसी भी एक्सट्रीम से तो आंसर क्या आएगा? दूसरा एक्सट्रीम आएगा. तो 6600 डिवाइड बाय, अभी एक्सट्रीम क्या है? 15, सॉरी मीन क्या है? 15. तो प्रोडक्ट ऑफ मीन है, प्रोडक्ट ऑफ मीन जो है मीन है 55 एंड 120. तीसरा रूल क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ मीन डिवाइडेड बाय वन एक्सट्रीम गिव्स द अदर एक्सट्रीम. सो प्रोडक्ट ऑफ मीन क्या है? 55 इंटू 120 6600. उसको किससे डिवाइड करना है? एक्सट्रीम से. सो 15 से डिवाइड किया, आंसर आया 440. 440 क्या है? दूसरा एक्सट्रीम. सो समझ गए तुम लोगों को रूल रेशो प्रोपोर्शन के. सो रेशो प्रोपोर्शन मेथड सिंपली तुम लोगों को याद रखना है कि उसके रूल्स कैसे होते हैं. अभी these are some of the examples which you are supposed to solve and you are supposed to put the answers in the comment section. अब ये जो है ये हम लोगों का पहला सम, पहले टाइप का 80% एंड 40%. ये है क्या है? गिवन स्ट्रेंथ है. ये गिवन स्ट्रेंथ है, तुम लोगों को कैलकुलेट करना है 70% के लिए. 70% क्या है? रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ है. तो 70% दोनों के बीच में फॉल होता है. हाँ होता है. डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेना है 80 40. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में लिखना है 70. सो 80 माइनस 70 एंड 40 माइनस 70, जो भी आंसर आएगा वो क्रॉस सेंटर्स पे लिखना है
एंड जो पार्ट्स आएंगे वो रिस्पेक्टिव स्ट्रेंथ के होंगे. यू आर सपोज टू गिव द आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन वंस यू सॉल्व द एलिगेशन अल्टरनेट का सम्स. सेकेंड वाला सम भी है, वो भी सेम है. 70% एंड 15% दिया हुआ है, तुम लोगों को कैलकुलेट करना है 30% के लिए, बट अभी यहाँ पे वॉल्यूम भी दिया है, तो ये दूसरे मेथड में आता है जो कि रेशो प्रपोर्शन वाला मेथड है. रेशो प्रपोर्शन वाले मेथड में पहले तुम लोगों को नॉर्मल मेथड से पार्ट्स कैलकुलेट करके लेने हैं और फिर 70% के पार्ट और 15% के पार्ट्स का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है. अभी यहाँ पे भी सेम है. 8% फाइबर हैज टू बी मेड, मतलब 8% स्ट्रेंथ को बनाना है. कौन से स्ट्रेंथ से? 3%, 6% एंड 10% से. तो ये किस में आया? 3 वाले में. तो इसमें अभी हम लोगों को कपल्स बनाने हैं. ये 3 है, 10 2 बार लिंक हुआ है क्योंकि 8 बीच में फॉल होता है 3 और 10 के, और 6 और 10 के. सो 3 लिंक्ड टू 10 एंड 6 लिंक्ड टू 10. सो ये भी सेकेंड मेथड के जैसे ही सॉल्व करना है. देन हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ 60, 50, 40, 30. अभी यहाँ पे क्या आएगा? डिसेंडिंग ऑर्डर में आएगा. 60, 50, 40, 30. रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ क्या है? 45. सो ये भी तुम लोगों को एलिगेशन से सॉल्व करना है. इसका आंसर जाएगा यहाँ पे, इसका आंसर जाएगा, इसका आंसर यहाँ पे, इसका आंसर यहाँ पे, इसका यहाँ पे, इसका यहाँ पे. सो 60 माइनस 45, 50 माइनस 45, 40 माइनस 45, 30 माइनस 45, जो भी आंसर है यहाँ पे पार्ट्स आएंगे एंड दैट विल गिव यू द आंसर दैट हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ 60% you are supposed to mix, how many parts of 50%. So you are supposed to put the answer in the comment section. Then next question is also same, 90, 60, 30 and water दिया है अभी, तो फोर्थ दिया हुआ है जो कि 0 है. तो तुम लोगों को लिखते वक्त कैसे लिखना है? 90, 60, 30 एंड 0 एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में आएगा 50 और इसके आंसर्स लिखने हैं. तुम लोगों को रिस्पेक्टिव आंसर्स लिखने हैं. ये दो पेयर. अभी कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ 70%, 60%, 40%. अगेन सेम है, यहाँ पे आएगा 70, 60, 40, 30 एंड रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ है 55. सेम 4% स्ट्रेंथ है. तो आपको आंसर्स निकालना है ये क्वेश्चंस का और इसके आंसर्स तुम लोगों को कमेंट सेक्शन में पुटअप करने हैं. अगर कोई क्वेरीज है तो वो भी कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा so that we will be able to solve your queries easily. Thank you.